एप्लीकेशन ऑफ कोनिक सेक्शन उससे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका यह क्वेश्चन देखिए, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स। एक आर्क जो है वह सेमी इलिप्स के रूप में है। इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। सेंटर पर यह 8 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर ऊंचा है। Find the height of arc at a point 1.5 meter from one end. AB यह आर्क है, इसका यह सेंटर है वो, यह आर्क जो है वह 8 मीटर वाइड है, यानी गिवन AB इज इक्वल टू 8 मीटर। और क्या कहता है, सेंटर पर यह जो है वह 2 मीटर हाई है। OC is equal to 2 meter. Find the height of arc. कहाँ हाइट निकालना है? तो at a point 1.5 मीटर from one end. एक इंड, मान लीजिए यही इंड है, इस इंड से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर, यह डिस्टेंस है 1.5 मीटर। BD is equal to 1.5 मीटर। इस डिस्टेंस पर आर्क जो है वह उसकी ऊंचाई DP हाउ मच? DP is equal to H लेट, यही निकालना है DP। AB is equal to 8 मीटर, therefore OB is equal to OA, that is equal to 4 मीटर। Since O is center, O जो है वह सेंटर है, और AB it is called 2A, तो OA और OB it is called A, that is equal to A। OC that is 2 meter, it is B। Equation of ellipse is x square by A square plus y square by B square is equal to 1. X square by A square, A4, 4 square 16 plus y square by B square, B2, 2 square 4 is equal to 1, equation 1. Equation 1 is the equation of given ellipse. It is semi-ellipse or ellipse. Now, BD is equal to 1.5 meter, therefore OD is equal to OB minus BD. OB 4 minus BD 1.5, that is equal to 2.5 meter. DP is equal to H. Therefore, coordinate of point P is O is center, that is origin. OD is equal to 2.5. DP is equal to H. The coordinate of point P is 2.5 H. Since P lie on this ellipse, hence it satisfies 1. यह P पॉइंट जो है वह इलिप्स पर है, जो P का कोऑर्डिनेट जो है वह इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो x के बदले में 2.5, y के बदले में h पुट कर देते हैं। Hence, x square 2.5 square by 16 plus y square h square by 4 is equal to 1, or 2.5 square 6.25 by 16 plus
h square by 4 is equal to 1. इसको इधर ले आए, h square by 4 is equal to 1 minus 6.25 by 16. LCM ले लिए 16 minus 6.25 तो 9.75 by 16 h square. तो h is equal to 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.75 by 16 into 4 square root h square. तो h is equal to अब 9.75 by 2 square root इसका स्क्वायर हो जाएगा 3.12 करीब 2 डिजिट तक बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी h इक्वल टू निकल गया 1.56 मीटर अप्रॉक्स। यह क्वेश्चन देखिए। Solution: F1 and F2 are two flagpoles in the rheoscoscrum. The sum of distance, suppose the main is here, the sum of distance from this point P and Pf1 plus Pf2 is constant, that is 10 meter, always constant. Hence, the path of main is elliptical. So here, F1 and F2, two flag posts. F1, F2 is equal to 8 meter. That is 2C. F1, F2, 8 meter, it is 2C. Or C is equal to 4 meter. Sum of distance Pf1 plus Pf2, it is equal to 10 meter, and that is called 2. Therefore, A is equal to 5 meter. A is equal to 5 meter, C is equal to 4 meter, hence B is equal to A square minus C square under root 5 square minus 4 square under root 25 minus 16, 9 under root 3 meter. B is equal to 3 meter, A is equal to 5 meter. Therefore, equation of the path traced by man is x squared upon a squared plus y squared upon b squared is equal to 1, or x squared upon a 5 squared 25 plus y squared upon b square, b just निकाले है कितना 3 square 9 is equal to 1. This is the required equation of that path. तो इस तरह से हमने एप्लीकेशन ऑफ कोनिक सेक्शन का 10-12 प्रॉब्लम बनाए हैं, आपको दिए हैं बना करके। यदि आप 1-2 बार मात्र देख करके इसका एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में होगा, आप सबसे पहले इजीली बना करके उसको दे सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने इससे पहले वीडियो में अपना नंबर दिया है, उस नंबर पर आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।